नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जहि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञाविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए मावती महादेव की जय। श्यावती रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामम् रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय
मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता बोलियो उमापति महादेव की जय शंकर भगवान की जय Devotees, now the time to worship Bhagavan Shiva. Let's come on, please, everyone. सभी लाइन लगा लें. Please make one line, and you can make the offerings to all the murtis while we singing Lingashtakam. बोले उमापति महादेव की जय. ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशो मृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तुतं वरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यविश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं
ब्रह्मा मुरारिसुरार्चितलिङ्ग निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। देवमुनि परवार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसोयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सच्चित्पापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। देवगणार्चित सेवितलिङ्गं भावीरभक्तिभिर्वचलिङ्गं त्रिकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गं अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सुरगुरुसुरवर पूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदा चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन समोदते। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए उमापति महादेव की जय। शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। अभी आप सभी बैठे थोड़ी देर के लिए। आशीष जी आप 2 मिनट की पूजा करें। सभी बैठे, बिठा दो सब।
सभी बैठ जाइए जी प्लीज है, आप उसके बाद बात करना अब सभी। बोलिए मावदे महादेव की जय। तो आइए बड़े भाव से श्रद्धा से थोड़ी देर के लिए सभी भजन करें। As we all will sing some bhajans. Those who want to sing bhajans, please come this side, and like to say special thanks Ashish ji and his family, those who are sponsoring today's puja. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बेटी के वस्त्र धारण की पूजा करेंगे हम, तो लेकिन आप सभी थोड़ी देर के लिए बैठें और प्रभु से प्रार्थना करें, भजन करें सभी मिलकर। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। वो उनके हैं जो उनको अपना बना ले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवारी। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवारी। जो इस द्वार पे अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले, महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन
के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। उमापति महादेव की, उमापति महादेव की जय। सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना। अति गहरा उसको भी मैं क्या जानूं, परम भजन का भी अति गहरा उसको भी मैं क्या जानूं। प्रभु 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 करना जानूं, प्रभु 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 करना जानूं। तेरा जल जरना जानूं, सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। गुन गाए प्रभु नयन छोरे, फिर क्यों तुम गुन गाते हो, फिर क्यों तुम गुन गाते हो। मैं बोला मैं प्रेम दीवाना, इतना बातें क्या जानूं, सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। सुर की गति में क्या जानूं, एक
क्या जानू, एक भजन करना जानू। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। 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 भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। लोक यही डर, लोक यही है, यही डरा और व्योम, यही डरा और व्योम। यही पूरी तन नारायण है, यही सनातन ओम, यही सनातन ओम। इससे भरा नहीं कोई काम, इससे भरा नहीं कोई काम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। इसके करे तब अजबनु के, गजब है इसे के गजब है इसे के। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिन बाते बिनते, बिन बाते बिनते। यही सवारे सारे काम, यही सवारे सारे काम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन
जीवन है संग्राम, मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया दीप जलाए शिव शंकर कैलाशपति। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया दीप जलाए शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
राधा के मन में बस गए कुंज विहारी। राधा के मन में बस गए श्याम विहारी। राधा के मन में बस गए कुंज विहारी। राधा के मन में बस गए कुंज विहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, भूली सुध बुध सारी। राधा के मन में बस गए कुंज विहारी। राधा के मन में बस गए श्याम विहारी। श्याम नाम की चुनरी ओढ़ी, श्याम नाम की चूड़ियाँ। श्याम नाम की चूड़ियाँ, श्याम नाम की चूड़ियाँ। अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियाँ। मिट गई सारी दूरियाँ, मिट गई सारी दूरियाँ। कान में कुंडल गले जंती, माला लागे प्यारी। राधा के मन में बस गए श्याम विहारी। राधा के मन में बस गए श्याम विहारी। राधा के मन में बस गए श्याम विहारी। बैठ कदम्ब की डार कन्हैया, मुरली मधुर बजाए। मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए। सांझ सखारे मुरली के स्वर, राधा राधा गाए। राधा राधा गाए, राधा राधा गाए। इस मुरली की तान पे जाए ये दुनिया बलिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम विहारी। 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 अधर सुधा रस मुरली राधे, कान्हा रास रचाए। कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए। कृष्ण कन्हैया राधा रचना, प्रेम सुधा बरसाए। प्रेम सुधा बरसाए, प्रेम सुधा गाए। प्रेम मगन ही सब मिल बोलो, जय हो वांके बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम विहारी। राधा के मन में बस गए श्याम विहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, भूली सुध बुध सारी। राधा के मन में बस गए श्याम विहारी। राधा के मन में बस गए कुंज विहारी। राधा के मन में बस गए श्याम विहारी। राधा के मन में बस गए कुंज विहारी। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। युगल जोड़ी सरकार की जय। Namaskar, everyone. Thank you for everyone that is out today, joining us and partaking in Sunday service today. Now is also the time for bhog. So if you have anything to offer, any offerings or bhog, prasad, please bring up to Mataji so we can
offer bhog. So if everyone can please stand up for bhog, please. बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जयकारा शेरा बलिदा बोल सच्चे दरबार की जय। आओ भोग लगाओ मेरी मैया जी, आओ भोग लगाओ प्यारे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, भिलनी के बेर सुदामा के तंडुल, भिलनी के बेर सुदामा के तंडुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आपके बसु आपके आगे, हम भगतन का कछु नहीं लागे, प्रेम सहित तुम खायो मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगायो मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।
बोले बाल कृष्ण लाल की। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा रानी, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों में लिपटाए रखना राधा रानी, चरणों में लिपटाए रखना राधा प्यारी, चरणों में लिपटाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे सारे नाते, किशोरी तेरे दर पे आ गया राधा रानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया। दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया राधा रानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया महारानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, जग से बचाए रखना राधा रानी, जग से बचाए रखना राधा रानी, हो जग से बचाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना राधा प्यारी, कृपा बरसाए रखना।
सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं राधा प्यारी सदा ही तेरा नाम सिमरूं लखी राधा नाम वाली है लगन तू लगाए रखना राधा प्यारी लगन तू लगाए रखना राधा प्यारी लगन तू लगाए रखना राधा प्यारी कृपा बरसाए रखना मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना राधा प्यारी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना राधा प्यारी कृपा बरसाए रखना तेरे नाम के मैं रंग में मैं डोलूं हाँ इन गलियन में राधा रानी ब्रज की गलियन में राधा रानी ब्रज की गलियन में तेरे नाम के ही रंग में मैं डोलूं ब्रज की गलियन में राधा रानी ब्रज की गलियन में राधा प्यारी हो ब्रज की गलियन में कहे चैत्र वेत्र श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना राधा प्यारी कृपा बरसाए रखना राधा प्यारी कृपा बरसाए रखना मेरी विनती यही है राधा रानी मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना राधा प्यारी 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 कृपा बरसाए रखना मुझे तेरा ही सहारा महारानी 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 कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना राधा प्यारी 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 कृपा बरसाए रखना बोले राधा रानी सरकार की जय बोले वांके बिहारी लाल की जय Namaskar everyone. Thank you again for everyone that is joining us today. I want to give a welcome to each and every one of you on today's Sunday morning satsang. Again, we have satsang every Sunday morning from 10 a.m. until 12 o'clock. And at 12 o'clock we have Aarti and followed by Priti Bhoj every Sunday. I also want to say special thank you to our sponsors today. I don't see them right now, but Ashish ji, they just welcomed a baby into their lives, and they took the chance today to sponsor our Sunday Satsang. And again, Sunday Satsang can be sponsored by anyone. If you're celebrating anything, any birthdays,
any wedding anniversaries, anything special in your life, or even if it's not even a special day, you just feel like sponsoring, you're more than welcome to sponsor any Sunday service. There's a calendar right when you walk outside those doors on the right side. There's a calendar there for all the upcoming Sundays, and any available Sundays are there as well. And now is the time for our satsang, so if everyone can just put your hands together as we recite Om 3 times. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अपने मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान जी के श्री चरणों में अपने जीवा से हरि नाम संकीर्तन का उच्चारण करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में।
श्यामायान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामायान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामायान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामायान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम रास्ते में बाग बना जाना, श्याम रास्ते में बाग बना जाना, श्याम रास्ते में बाग बना जाना। श्यामा रास्ते में बाग बना जाना। फूल चुगूंगी तेरी माला के लिए, फूल चुगूंगी श्यामा तेरे लिए, फूल चुगूंगी श्यामा तेरे लिए। तेरी बाट निहारूं कुंजगल, तेरी बाट निहारूं कुंजगल, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामायान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामायान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम रास्ते में कुआं खुदवा जाना, श्याम रास्ते में कुआं खुदवा जाना, श्याम रास्ते में कुआं खुदवा जाना। श्याम रास्ते में कुआं खुदवा जाना। मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए, मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए, मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए। मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए। मैं तुझे नहलाऊं मल मल के, मैं तुझे नहलाऊं मल मल के, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामायान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामायान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा वृंदावन में आ जाना, श्यामा वृंदावन में आ जाना, श्यामा वृंदावन में आ जाना। श्यामा वृंदावन में आ जाना। आकर के रास रचा जाना, आकर के रास रचा जाना। सुनी गोकुल के न गलियों में, सुनी गोकुल के न गलियों में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामायान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामायान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामायान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में।
श्यामा मुरली मधुर बजा जाना, 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 मोहे आके दर्श दिखा जाना, मोहे आके दर्श दिखा जाना, तेरी सूरत बसी है अखियन में, तेरी सूरत बसी है अखियन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। शमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामायान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। शमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, युगल जोड़ी सरकार की जय। Namaskar everyone. Again, as you can see, Vyasji, my Pitaji is not here today. He's usually here on Sundays, tries to make it a priority to be here, but just sometimes things come up, emergencies and stuff come up where he tries to avoid those, but obviously you can't avoid all emergencies. So we're just going to be doing a little bit of pravachan right now, and then along with bhajans, and then arti around 12 o'clock. So as you all know, Ganesh Chaturthi is coming up this week on the 30th. Tuesday is Ganesh Chaturthi, and we're going to be just going to be giving you a little bit of background. I'm sure everyone knows about Ganesh Ji and where he comes from, whose son he is, and I'm just going to be giving you a little bit of a little bit deeper knowledge, I guess, if you don't already know. We're going to be talking about Ganesh Ji's birth, his story, his significance, where he was born, how he was born, and how Ganesh Chaturthi starts, and typically when it ends with the Visarjan. Okay, so Ganesh Ji, on one day, goddess Parvati, Mata Parvati, was at home on Mount Kailash. And I'm sure a lot of the kids that are here may not know the complete story, so we try to emphasize in doing pravachan in English so they do understand, as well as a little bit of Hindi added on into it as well. So Ganesh Ji, one day Mata Parvati was on Mount Kailash. She was preparing for a bath, and she didn't want to be disturbed. And obviously when you're preparing for a bath, at those times we didn't have the proper bathrooms that we have now, with the curtains and the doors and the complete setup where you have all the privacy. So what she did is her goal was to take a bath, because Bhagwan Shivji wasn't available there as well. He goes on pilgrimages. He's away for lots of months, even potentially years sometimes. So she wanted to take a bath undisturbed. So what she did was
She had turmeric powder or haldi, and also her mitti from her body, any accumulated dirt, the natural accumulated dirt from her body. What she did was she took a little bit of the haldi as well as the mitti from her body, the dirt, and she breathed life into it, because obviously she's a bhagwan, she's a goddess, so she has the powers and mantras to breathe the life into this items that she had, and she created Ganesh. And Ganeshji, declaring Ganesh her loyal son at that time. And the next time when they grew up together, Ganeshji, as he grew up, and she obviously Shivji wasn't aware that that he had another son now in Ganeshji. So the next time Parvati decided to go for a bath, she posted Ganeshji on the guard at the door for duty to make sure nobody comes in. And it wasn't obviously a door, it was more like a cave in Mount Kailash. It was like a cave, and the entrance, she told him to make sure nobody comes in at all. And obviously him being a loyal, very, very loyal son, he didn't know anything else but to guard her and guard her privacy. So there were obviously a couple visitors there that came, and he denied them access, and then Shivji came. Shivji just appeared out of nowhere, and Shivji came home, and after many months he came, many years potentially, and he finds a strange boy there, just standing by the cave entrance. And he asked him who you are. He said, I'm Ganesh. I'm Parvati's son. And they don't know each other yet, because they haven't met yet, right? Because Shivji was away for so long. So Ganeshji, he told him, hey, you can't enter, you can't go past this area. I'm guarding for my mother. So Shivji tried to plead with him, hey, boy, let me go into this area. This is my home. I need to enter. And obviously Ganeshji declined access, and Shivji got angry. And at this point, he didn't want to deal with the guard just by himself, so he ordered a couple of his Sainiks, which are army, some of his army guys, to come and deal with Ganesh. Each of them tried, and they failed. They failed miserably. And then Ganeshji told him, at the end of the day, you cannot enter. None of you will be entering this area unless I allow it, or unless my mother finishes her bath, and then she'll come out and allow you access herself. Shivji got even more angry, sent some more army, and they all were defeated by the hands of Ganesh Bhagwan. And then Shivji was very, very furious. He took it upon his own hands to destroy this young boy and to fight him. And obviously Shivji, knowing the power that Shivji has, he was successful in this, and he cut off Ganeshji's head. And he just took his trishul, threw it at Ganeshji, and the first thing he did was just cut off his head, and the boy died immediately. And Shivji was obviously very, very angry, and he took some time to relax, and then at that point Parvati Mata came out, and to her surprise, her son is no longer there. And she's just furious at this point, seeing that there's no boy there anymore. She was enraged and felt insulted at this point. She felt so insulted that she wanted to destroy the entire world out of anger, because again, she has the roop of Mata Durga. So she said she's going to destroy the entire world, and Lord Brahma appeared at that point. Lord Brahma is, as we all know, he's the creator. He's the creator of this world, and he doesn't want to see his creation going to waste.
So he pleaded with Mata Parvati, saying, Mata, please calm down, think of your actions before you continue. We must all negotiate. I'm sure we can come up with some sort of understanding of what we need to do at this point. Shivji, Brahmaji, Parvatiji all sat down and they tried to calm Mata Parvati. And at this point, obviously, Mata Parvati is still angry and she's talking to Shivji. Shivji is obviously in more control now. He's not as angry because he's solved what he came out to do. He entered his area. He, of course, he killed a young boy, but there's always a meaning to all of this, everything that he does, right? So let us join in on a short bhajan as we prepare for the next one. बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ से ही ये। विधि का विधान जान, हानि लाभ से ही ये। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, निर्वाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय। So, as obviously that Mata Parvati learned that her son Ganesh had just been taken out by Bhagwan Shivji, she was enraged at this point. She had decided to again destroy the entire world and the creation because of her anger that nobody even considered him, nobody asked many questions, and they just took him out. So at this point, Lord Brahma and Shivji and Mata Parvati are all sitting there practically negotiating of what we can do and to calm her down and make sure she doesn't do this or take this action. So eventually they did calm her down, cool her down, and she said that she would really reconsider, and the only ways that she would reconsider and not destroy the world is that there's two conditions that must be met in order for this to happen. Condition one would be to bring back Ganeshji to life. And so that was one of the conditions, and the other condition would be that he would forever be worshipped before all of the other gods. And naturally saying is because she felt insulted by Shivji and anyone that tried to attack him, because they never asked any questions, they never took him into consideration, so she felt that they belittled him essentially. So she wanted him to be worshipped before all the other gods anytime there's a puja. So this is why whenever there's any sort of puja, birthday puja, any sort of wedding ceremony, any puja, we always worship Ganesh Bhagwanji first before, in the beginning of the puja. So first couple of mantras that we say are Om Sumuksche Kadantascha Kapilo Gajakarankaha Lambodrascha Victo Vignanasho Vinayaka Dhumraketur Ganadhaksho Bhalachandro Gajana Dvachatani Namani Hapte Srinuyadapi.
So this is, again, these are some mantras that we say towards Ganesh Bhagwanji's, reciting some of his names in the mantras and making sure we pray to him before we continue anything else, because he is essentially the, we do this because he's essentially the remover of any obstacles. We want to pray to him to make sure we have a smooth ride ahead in no matter what task we do. So we come here, I see a lot of young kids and anyone that come to this country, they come here, they pray to Bhagwan Ganesh to make sure their life is successful going forward, whether they're continuing with their education, their marriage, anything like that. So that's one of the reasons that we pray to Ganeshji at first. And so both now, both these conditions were agreed upon. Again, first being bring Ganeshji Bhagwanji back to life, bring Parvati's son back to life, and to make sure he's prayed before everyone else. So Shivaji and Parvati had both cooled down at this point, and Shivji had realized his mistake and agreed to Parvati's conditions. So he sent out Brahmaji with orders to bring back the head of Ganeshji, of the little boy. So they tried to, he did find the head. He eventually tried to put the head back onto Ganeshji's body, but to no success. They didn't have luck to bring the body back to life. So what he did after that, he told Brahma, listen, what I want you to do is now go into the world, the first animal, first creature that you see with that is laying with his head facing north. That you're going to bring that creature, and we're going to replace this boy's head with that creature's head. There's a couple different versions of this. There's also one where they say there's one where I just said any animal that is any strong animal with the head facing north, and another version was where you bring back any mother that is turning away from her child when they're sleeping. So bring the head of that baby. So Brahmaji did soon return with the head of a strong and powerful elephant, and which Shivaji placed onto Ganeshji's head. And he breathed some life into that and declared Ganesh to be his own son, and gave him the status and being foremost among all the Bhagwans, and calling him Ganpati. Ganpati means the leader of the Ganas. The leader of Gana. Gana means beings, any people, any insect, any animals. Gana. That's what Gana is. So the leaders of the Ganas, and Pati means leader. So the leader of all Ganas is Ganpati Bhagwan. So Ganpati Maharaj ki jai. So बोले गणपति महाराज की मैं नावा तेरा अद्भुत लाडला गणेश, मैं नावा तेरा अद्भुत लाडला गणेश, मनावा तेरा अद्भुत लाडला गणेश, अद्भुत लाडला गणेश हो, अद्भुत लाडला गणेश, मनावा तेरा अद्भुत लाडला गणेश, मनावा तेरा अद्भुत लाडला गणेश।
जननी ने तो है जन्म दियो है, किस जननी ने जन्म दियो है, किस जननी ने तो 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 है जन्म दियो है, किस जननी ने तो है जन्म दियो है, किसने दियो उपदे हो, किसने दियो उपदे, मनावा तेरा अद्भुत लाडला गणे, मनावा तेरा अद्भुत लाडला गणे। माता गौरा ने जन्म दियो है, माता गौरा ने जन्म दियो है, माता गौरा ने तो है जन्म दियो है, माता गौरा ने तो है जन्म दियो है, माता गौरा ने तो है, माता गौरा ने, माता गौरा ने तो है, माता गौरा ने, माता गौरा ने जन्म दियो है, माता गौरा ने जन्म दियो है, शिव ने दियो उपदे हो, शिव ने दियो उपदे, मनावा तेरा अद्भुत लाडला गणे, मनावा तेरा अद्भुत लाडला गणे, अद्भुत लाडला गणे हो, अद्भुत लाडला गणे, मनावा तेरा 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 अद्भुत लाडला गणे। बोली गणपति महाराज की जय। So at this point, the elephant head that they got has been placed on Ganpati ji now. And again, we know the meaning of Ganpati. And there's not just because they got, there's a meaning behind everything. So they got an elephant head. And why is that? We see Ganesh Maharaj ji sitting there. And he has an elephant head. Why? Because that's the biggest creature there is in the world. He's got the biggest head in the world because you have to think big, right? You have to think big and you have to think intelligently. So that is the meaning behind the elephant head. And then Ganesh ji also has smaller eyes. So small eyes mean you have to stay concentrated, and concentration is key. And elephants also have big ears. So the big ears symbolize listening and being able to concentrate, and importance of listening in general. And then the hand out. One of the hand is out for Ganesh ji, and a lot of every Bhagwan ji when their hand is out, because they're blessing us at all times. If we're going to them, we ask for their blessings, so their hand is out for to give us blessings. And he has also the sweets in his hand, which is laddu or modak. Modak, this is meaning you can get sweet rewards. So you have to concentrate and listen and keep your rewards in your sight, or keep your goals in your sight. And after you achieve those goals, you can have those achieve those goals and have sweet rewards right after. So you can always attain those. And why does he, Ganesh Bhagwanji, sit on a mouse? So this is for your desires. So you have to
you have to have a vision, you have to have a goal, so you can reach those goals and then also keep your desires under control. So by achieving those desires, also keep a sight on them and then keep them under control as well. So there's always a symbolism in all of this. And at the end of the day, it's teaching us that we have to be disciplined by listening. We have to think intelligently. We must concentrate and just listen and speak less. Again, you don't see the mouth on Ganeshji because you just see the trunk. The mouth is hidden behind his trunk because it's a smaller mouth. So we must control our words and use our ears to listen and our head to think logically. So Ganesh Chaturthi again is this Tuesday on the 30th is being celebrated in Canada. I know it is celebrated differently around the world. In India, it's a little bit different just because of the time zone differences and the moon. But right now in Canada, it is going to be celebrated here this Tuesday. We're going to be doing a celebration here as well. Every year we do Ganesh Chaturthi. We do the Stapna, Murti Stapna of Ganeshji with the clay, big Ganeshji made out of clay, and then we do Visarjan as well. So this is also celebrated all around the world, and it is huge, obviously, in India, in other countries where Hinduism is big. So just there's a, I'm not sure if you can see it there on the screen. This is a little picture of in Mumbai just last year of Ganesh Visarjan. So everyone just crowds the street in Mumbai. It's huge. In Maharashtra, they say there's about 150,000 to 200,000 Ganesh murtis being made. And then after 10 days of worshipping Ganeshji, they go out to the lake, the ocean, to do Visarjan. And one of the reasons we do the Visarjan is we pray for 10 days for the murti, but at the end of the day, we also in Hinduism, we teach detachment. So we shouldn't always be attached to anything. Obviously there's some things, but we have to learn detachment as well. We pray to the murti for so many days, but then we go and we detach ourselves from the murti as well by doing a Visarjan. And so this is a picture there of in Mumbai, and then again in Mumbai again, a huge, they make maybe 20, 30 feet tall murtis sometimes, and everyone, hundreds of thousands of people go, and there they go to the ocean. It's right near the ocean, and they go in a boat and they do Ganesh Visarjan. And this is in London, UK as well. London, UK has big events. It's celebrated all around the world, obviously, and there's in Australia, New Zealand, obviously Canada, Singapore, Malaysia, the West Indies, Trinidad, Tobago, Guyana, Suriname, all over the Caribbean it's celebrated. Fiji, Mauritius, I know, Fiji, United States, and again, UK right there. And even in, this is a ceremony happening in Ghana, Africa. It is big over there as well. Again, we think that, you know what, when we come into this country, or we travel from India to another country, I've seen a lot of people, they stray away from their culture, they stray away from their from Hinduism, because we think that it's hard to stay in touch. But you know what, you'd be surprised with how many more people are like you. They're thinking the same thoughts, they're thinking, and if you just, it just takes one or two people to start building something, right? It's like a rolling ball effect, or a snowball effect, where we get a couple of us, and then we tell more people, and it goes from there. And this is actually our Ganesh Visarjan we did a couple years ago in Pickering Beach, just down the street, 15-20 minutes from here. I encourage each and every one of you, where we will be doing Visarjan again next Sunday.
we're going to be going to the lake again. This is again just some pictures of, there was a lot of us there. I know the projector makes it tough to view what is happening there, but we're going out into the lake on the very right, and the very left we're doing the Ganesh Puja at the lake. And in this picture, there's probably about 100 people there at least, 100 to 120, 130 people there. You can't really tell. And then in the middle picture, it shows we take it about from the road. There's a park we park in, Rotary Park in Pickering, and we go from there, and it's like a parade. We sing the bhajans of Ganesh Maharaj, and then we all go together to the lake. We do the puja right by the lake shore, and we go, a couple of us go into the lake and far enough so we can do the Visarjan there, and there's no chance of Ganeshji returning onto the shore again. We give them deep enough water for the murti to dissolve there. And I do encourage each and every one of you to please partake. This year we're going to be doing it next Sunday. We're going to be leaving from this mandir after service next week around 2 to 2:30. We're going to be going there to the lake in Pickering. The reason we go to Pickering because the mayor of Pickering is Pickering Mayor Dave Ryan, and he's been involved in he's come to the mandir, either this mandir or when we were out in the Devi mandirs, and we have permits there to do the Ganesh Visarjan at the lake. While it takes a lot of time and efforts to get another location, whether it be, we were thinking a little bit something closer here, maybe by the Scarborough Bluffs or something, going there this year, but it does take there's a lot more people there, and then it's tougher to get access and the permit, so it took us a lot of years, so we still continue to go there to this date. So I know, I do encourage each and every one of you to partake in this event that we have coming up next Sunday again at 2 to 2:30. If this was sent out in an email as well for the newsletter. If you're not enrolled in the newsletter, I encourage you, please get involved. Let myself know, let any of the Panditjis know. Just visit our website, sign up for the newsletter, and get yourself involved. Continue the dharma that we've started here and continued here. This is our dharma to continue it. Let's not come into this country and lose what we've tried so hard to maintain. So again, next Sunday we're doing this, and there are other events coming up as well. I have arranged like a basketball tournament for the kids as well, like a little pick-up basketball games. If you have kids, or if you know any kids, we want to get, it's going to happen September 25th. It's a Sunday after service. We're going to be doing a little basketball tournament at the mandir outside, and there's going to be snacks for the kids, little trophies and stuff for the winners, and I just want to encourage the kids to come out, and this is one way to bring them out as well, right? So as we are going to be concluding soon, so if going to be, anybody wants to sing a bhajan or two bhajans, we're going to sing a couple of bhajans and then conclude. Anybody want to sing a bhajan, or Yogesh ji, or Pandit ji, if you want to aarti? जयकारा शेरा वाले दा बोले सच्चे दरबार की। आइए एक भजन माँ भगवती के श्री चरणों में। बहुत ही सुंदर भजन है और पंजाब के बहुत ही मशहूर गायक ने इस भजन को गाया है, तो कोशिश करूँगा आप इस भजन को समझें। पंजाबी में ये भजन है, तो बड़े भाव से इस भजन को, इस भेंट को माँ भगवती के चरणों में रखेंगे। तू दातिए असी मंगते तेरे, हो बण बण खड़े सवाली।
ਦਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਗਏ ਖਾਲੀ। ਤੂੰ ਦਾਤੀਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਦਾਤੀਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਦਾਤੀਓ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ। ਬਣ ਬਣ ਖੜੇ ਸਵਾਲੀ, ਬਣ ਬਣ ਖੜੇ ਸਵਾਲੀ। ਤੈਨੂੰ ਦਾਤੇ ਕਿਸੇ ਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਗਏ ਖਾਲੀ। ਤੂੰ ਦਾਤੀਓ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਦਾਤੀਓ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੀਏ ਤੇਰੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਤੂੰ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਗਲੇ ਦੇਵੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰਖਾਵੇ। ਤੂੰ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਗਲੇ ਦੇਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰਖਾਵੇ। ਨਾ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਨਾ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਦਰ ਦਰ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ। ਤੂੰ ਦਾਤੀਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਦਾਤੀਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ। ਬਣ ਬਣ ਖੜੇ ਸਵਾਲੇ, ਬਣ ਬਣ ਖੜੇ ਸਵਾਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਦਾਤੇ ਕਿਸੇ ਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਤੇ ਕਿਸੇ ਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਗਏ ਖਾਲੀ। ਤੂੰ ਦਾਤੀਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਦਾਤੀਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ। सोना चांदी छत्र चढ़ाया हो, कोई ना भेंट ले आए। ना सोने दा छत्र चढ़ाया हो, ना कोई भेंट ले आए। मैं मस्तानी नाम तेरे दी, मैनू होश न आए। मैं मस्तानी नाम तेरे दी, मैनू होश न आए। मैं पापी तू बख्शण हारी, अर्ज करां दर तेरे। मैं पापी तू बख्शण हारी, अर्ज करां दर तेरे। अंत
समय जद कूका बजियां, अंत समय जद कूका बजियां, तू पर्दे तक लई मेरे, तू दाते असी मंगते तेरे, तू दाते असी मंगते तेरे। जपले नाम ते करल सेवा हो, कर्म कमाल कोई। जपले नाम ते कर ले सेवा, कर्म कमाल कोई। दमदा के परबासनि जिंदे, आज मोई कल मोई। दमदा के परोसन जिंदे, आज मोही कल मोई। उस वेले मर जाने माना, कौन सुनो हर जोई। उस वेले मर जाने माना, कौन सुने हर जोई। जिस दिन चार कहारा मोड़े, जिस दिन चार कहारा मोड़े, चकलो चकलो होई, चकलो चकलो होई। तू दाते असी मंगते तेरे, तू दाते असी मंगते तेरे। बण बण खड़े सवाले, बण बण खड़े सवाले। तैनू दाते किसे नी कहना, तैनू दाते किसे नी कहना। जे अज मुड़ गए खाले, जे अज मुड़ गए खाले। तू दाते असी मंगते तेरे, तू दाते असी मंगते तेरे, तू दाते असी मंगते तेरे, तू दाते असी मंगते तेरे। जयकारा शेरा मली दा बोल सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। So, again, thank you for everyone for coming out today. We have a Sunday service every Sunday morning from 10 to 12, followed by Arti at 12, sometimes shortly after 12 o'clock. And I encourage each and every one of you, if you're here right now, wait another 5 minutes. We will be doing Arti. And after Arti, we have Chanamra Prasad and Priti Bhoj after Arti. Again, just a couple events coming up here are going to be our, Ganesh Chaturthi. We're going to be doing it this Tuesday evening, August 30th from 6 to 9 p.m. We're going to be celebrating Ganesh Chaturthi with Ganesh Stapna. And then again, next Sunday, we'll be doing the Visarjan at Pickering Lake by the beach. If you need the address or any details for that, let myself know, let any of the Panditjis know. We can give you the details for that. And on top of that, from September 5th to September 7th, we have Param Pujya
Dr. Shyam Sundar Prasharji Maharaj coming to our mandir to give Gyan Yagya. It's going to be from Monday to Wednesday, from September 5th until September 7th. And that is going to be from 6:30 p.m. until 9 p.m. He's going to be doing the Katha here, September 5th to September 7th. And Ganesh Chaturthi again, and then after that we have September 25th is the kids, the basketball tournament, and the games are going to be playing outside. So that is, they do have to register for that, and we'll be sending out an email regarding all these events. Again, there's a weekly email that does come out. If you're not enrolled for those, please do enroll for the weekly newsletter that we have. And other than that, thank you for our sponsors, Ashish ji and his family that sponsored today. And again, we have Sunday sponsoring available every Sunday. There's a board outside that if there's available dates, please look at those if you want to do anything on any Sunday or any other available dates. Other than that, we will stand up for Aarti, and after Aarti, Charnamrita Prasad. Please make 2 to 3 lines for Aarti. Om Ararti Parthe Gungrajaha Piturpraye Dhamahihi Divaha Sada Gungshi Brihati Vitishta Satvikham Vardate Tamaha Om Chakshudam Sarvalokanam Timrasya Nivaranam Arartekyam Kalpitam Bhakta गृहाण परमेश्वर कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं तु परदीपितं आरार्तिक्यं कुर्मे पश्यामि वरदो भव पश्यामि वरदो भव जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय मांग सिंदूर विराजत टीको मृद मद को मैया टीको मृद मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारे सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ शुंभ विदारे महिषासुर घाते मैया महिषा
धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मिया नाच करत मिया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी भुजास्तयति शोभित वरमुद्रा धारे मैया वरमुद्रा धारे मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नित गावे कहत श्रद्धानंद स्वामी कहत मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करनी मैया जय मंगल मूर्ति तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय अम्बे गौरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे बार बार बरमांगौ हर्षिदेव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग भक्ति सदा सत्संग बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय गणपति महाराज की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बांके बिहारी लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय सूर्य नारायण भगवान की जय सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय सब संतन की जय सदगुरु महाराज की जय
बोलो सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, साचे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Everyone please bow down. अब नीचे माथा टेकें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले वृंदावन धाम की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। आप सब आरती ले लिए। Everyone please take आरती. After आरती, Charnamrit and Prasad will be given at the front, and after that there's Priti Bhoj downstairs. And again, this coming Tuesday, Ganesh Chaturthi. I encourage the Tuesday evening, please come out. We'll be doing the Stapna for Ganesh Bhagwan, and then next Sunday we'll be doing the Ganesh Visarjan at the lake. So I encourage each and every one of you, please come. And we'll be starting Bal Vikas classes for all the kids September 18th. We're going to be, it's free classes we do here. We teach them, all the kids, about Hinduism, about our dharma. Again, these are free classes here on Sunday, September 18th. We'll be starting them again for 1 hour of every class from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. Sunday, September 18th. That's when we start. So I encourage you, invite each and every one of you to bring your kids, tell everyone to come out to these events that we're providing you. Jai Mata Di. सभी को जय माता दी। और मैं आप सभी को अगेन रिमाइंड एवरीवन, नेक्स्ट वीक दे परम पूज्य श्री डॉक्टर श्याम सुंदर जी महाराज फ्रॉम वृंदावन, ही came first time in Canada, and he doing another temples, so many temples in Canada, in Toronto inside. So our temple, he's coming 5 September to 7 September. He's doing the bhajan satsang. He's the very nice person and very knowledge holder. वो बहुत ही विद्वान हैं, और सभी आप आएँ और उनके मुखार विंद से भगवान जी की चर्चा सुने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। मुझे लगता है वर्ल्ड में एक ही परम हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े विद्वान के मुखार विंद से हमें प्रवचन सुनने को मिलेगा। तो आप सब प्लीज़ कम एंड जॉइन अस द satsang 5 to 7 September. He is the very nice person and very knowledge holder, the world famous Katha Pravakta Shri Dr. Shyam Sundar Ji Maharaj. So please come and join us
this satsang. Thank you so much again. You come and join us this morning Sunday service. Thank you so much again. Jai Mata Di. Mataji bless you each and everyone. Jai Ma Bhagavati.